A warm and joyful morning to everyone present here. Today, college and hospital has organized a CME program on the theme Doctor-Patient Relationships and Ethical Issues in Medical Practice. I heartily welcome you all to the today's CME program. I, Dr. Mehek Jaggi, And I, Dr. Mukul Mitra, interns at T.S. Mishra Medical College and Hospital, are honored to be speaking you before all. Our chief guests have not yet arrived, but without any delay, we will be beginning with the first segment of today's program. But before that, we would like to felicitate our guest speakers, Dr. Anju Singh ma'am and Dr. Prakriti Gupta ma'am. For that, I would like to invite Dr. Sonali on the stage to do the honors. Amongst us is one of those gems of our institute, Dr. Prakriti Gupta ma'am, who is an alumni of GSPM Medical College, Kanpur and completed her DND from Paras Hospital, Gurgaon. She has done 1-year residency in emergency medicine from Dr. Ram Manohar Lohia, Institute of Medical Sciences, Lucknow, and 2-year senior residency in anesthesiology from Dr. RML Institute of Medical Sciences, Lucknow. She is currently working as an assistant professor in Department of Anesthesiology from past 2.5 years in T.S. Mishra Medical College and Hospital. And she is also co-supervising 2 candidates in MD Anesthesiology. Let me invite Dr. Prakriti ma'am to begin with the first segment of today's CME, which has been formulated with the support of Dr. Prem Kumari Bhambre, ma'am, Head of Department Anesthesiology. Please, ma'am. Present on the topic ethical issues related to in the practice of anesthesiology. I take this honor on behalf of our dear HOD ma'am. This topic has been prepared under her supervision, Dr. Prem Kumari Bhambre ma'am. I will like to speak on ethical issues we face in anesthesiology, in the practice of anesthesiology. Why is there any need of ethics in anesthesiology or medicine? There is unprecedented progress in knowledge, skills, technology, pharmacology, and lack of understanding of pathophysiology monitoring. This has led to anesthesiologists to provide indispensable services to patients in operation theatre, critical care, pain management, super specialty units, research, and etc. Thus, there is an increase in ethical responsibility. What is ethics? It is the ability to distinguish between right and wrong, a benchmark of human behavior. Ethics is derived from the Greek word ethos, which means character. Therefore, ethics is the moral behavior of human beings governed by understanding of what is right and wrong. Right? I would like to request Dr. S.P. Rai sir, Dean Academic, to felicitate our honorable chief guest as a token of appreciation and respect on behalf of our institution. Science and law that deals with investigation, interpretation and presentation of medical evidence in judicial proceedings. First conference of Indian Academy of Forensic Medicine was organized in Goa in 1972. In that meeting, under the guidance of Dr. I.P. Rao, it was unanimously decided to register the society
for which an application was submitted and on 12th May it was registered under the Society's Registration Act of Goa in 1860. And last year, a forensic medicon of Indian Academy of Forensic Medicine was organized at SCPGI Lucknow, where Dr. Mukesh Sir was the organizing secretary and our principal and dean, Dr. A.K. Srivastava Sir, was the organizing chairman. And it was decided to celebrate 12th May each year as Forensic Medicine Day. Now I would like to request respected Mukesh Yadav Sir, Dr. A.K. Srivastava Sir, Dean Academics Dr. S.P. Rai Sir, Head of Department Forensic Medicine Dr. Y.K. Pathak Sir, Head of Department Community Medicine Dr. Colonel Rajesh Kumar Sir to come forward for the lamp lighting ceremony before Ma Saraswati to give this program an augur start. And Head of Department ELD Dr. Briti for the lamp सब थोड़ा आगे आ lighting. जाए सब साइड पीछे पीछे Ma Saraswati is a deity of education, knowledge, music, arts and speech. She is popularly known हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, अपनी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी के विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। हमसे हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। Thank you students, I am really grateful to you all for giving this program a soulful beginning. T.S. Mishra Medical College and Hospital was established in the year 2015 and the college was granted medical seats on 8 June 2016 by the Government of India. This institute was established by Mr. Satish Chandra Mishra, former Member of Parliament, renowned legal practitioner and former Advocate General of Uttar Pradesh.
I would like to call respected sir on the dais for the welcome and introduction of today's program. Dr. Mukesh Yadav sir. Learned speakers, Dr. Anju Singh, Dr. Prakriti Gupta, and so many more who are in the way of ES Mishra Medical College. Our faculty, residents, interns, it is my proud privilege to welcome you all in this lecture theatre. The Master of Ceremony has nicely introduced about the Forensic Medicine Day. This Forensic Medicine Day is basically the vision and beauty of Dr. Mukesh Yadav. At this time, he is the President of India, National President of Medicine was established in 1972 and it was registered by the Society Act on the 12th May 1972. So 50 years has been completed and that's why he has suggested in the general body we should celebrate this 12th May as a Forensic Medicine Day. Last year it was again celebrated in the Goa where the first conference of the Indian Academy of the Forensic Medicine has been completed. So this is a big day for us because on this day our national president is here and lot of the eminent. Now I welcome Dr. Mausami is also coming there. Eminent speaker is a professor in KTM and some other fellow in the meeting. So I am really very much thankful Dr. Mukesh Yadav is here and all of you are here. I am also very thankful to our faculty, residents and interns because I just taught within a week and first I talked to Dr. Mukesh Yadav and then others. Then after a very short notice, when I was expecting about hundreds of the delegates, but more than 90 persons have registered for this area. And ultimately, we have closed it. And number of faculty and interns and residents, they have not able to register it. So this is really very big support of a department of forensic medicine, which is one of the smallest department in this medical college. So I really very much thankful to all the faculty, residents and interns. So this time I would like to advise all the HODs because when Dr. Pathak can just score such a very good CME after a notice of some few days, so all of you can, I think in 2 months or 3 months, we can hold such CMEs and I think on behalf of you people, I just assure you, everybody will cooperate and we can have a good CME in 2 months every year. So, regarding the topic, everybody has to this master of ceremony has nicely is a forensic doctor-patient relationship and ethical issues in medical practice. This has been just chosen just to give some idea for young doctors. Of course, everybody should know, and everywhere you will find legal issues are there in practice. That's why you will find a lot of violence against doctors. Every day you just heard some violence against. So the only solution of violence against doctors is, of course, lot of legally the solutions are there. But basically, when you are practicing medicine in a proper way, in a scientific way, and then you will find that nothing will happen. So I think lot of learned speakers are there. They will give you the idea how to practice medicine, safe and graceful. In this program, I have just included all undergraduate students also, and a topic was given, same-sex marriage.
Same-sex marriage is also a very new topic, and now the foreign topic, and our undergraduate students, they will just give a debate on that, and Dr. Vaike Pathak is just monitoring the whole program of that. So my best wishes, my thank you for coming up all those and for this big scene. Thank you. I warmly welcome Dr. Rosmi Ma'am to today's CME program, and I would like to request Head of Department of Forensic Medicine, Dr. Vaike Pathak sir, to please felicitate our guest speaker. He is the principal of Rani Durgavati Medical College, Banda, Uttar Pradesh, and is also serving as President of Indian Academy of Forensic Medicine. He is a great academician. Apart from medicine, he has also done LLB from Jammu University, MBA in Hospital Care and Administration from Delhi University. He has 2 postgraduate diplomas, one in Human Rights from Indian Institute of Human Rights, New Delhi, and another in Healthcare Operation and Quality Management from AHA Noida. He is also the editor in Journal of Indian Academy of Forensic Medicine for 3 consecutive years, and Honorable Secretary of Indian Academy of Forensic Medicine. He has more than 26 years of experience in medical education and has published more than 100 papers in various national and international journals. Now I invite respected sir on the dais for the keynote address. First of all, I would like to pay my tribute to my teacher, none but your principal and dean, Dr. A.K. Srivastava sir. Without his guidance and support during my MD and MBBS day, I may not be possible to reach to this extent or giving that nice introduction of me. And the moment I joined as Additional Director Medical Education of the State of UP in Jawahar Bhavan on 3rd of April, I called Dr. Srivastava sir, whenever you call me for academic meeting, I am always available because this is my passion. And the new generation, young generation sitting in this auditorium, future of whole country is in your hand. The economy of any country cannot sustain without support of health, and for which you are the pillars. As the theme for this CME was chosen by Srivastava sir and team, Dr. Pathak, doctor-patient relationship and ethical issues in medical practice in a domain of forensic medicine. Again, I will congratulate all of you on 2nd National Forensic Medicine Day, which we recently started last year on the occasion of Foundation Day of Indian Academy of Forensic Medicine on 12th May 1972 in the state of Goa. Is there any different protocol means SOP in writing in your hospital or government of the UP? What are the criteria indication when you refer? अभी देखिए, अगर आपको याद हो, पता नहीं टाइम अक्सर याद रखिए, मुझे 11 बजे निकलना भी है। हाँ 11 हो गया। तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूँगा मेरे सर से कि मुझे भाई मीटिंग अटेंड करनी है भी 12 बजे। तो मैं फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करूँगी जब भी आप बुलाएंगे सर, और सैटरडे संडे यूजुअली मेरा ऑफ होता है। मेरा पैशन है एजुकेशन, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी इसकी। और रात के 10 बजे सर तो मैंने कहा था सर मेरा रख दीजिए, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, अभी ज्वाइन किया है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की बहुत एक्सपेक्टेशन में से है और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरा सरनेम याद है। आई एम ऑनेस्टली एडमिटिंग, तो आई डोंट वांट एनीथिंग टू पॉइंट फिंगर ऑन मी अबाउट, बिकॉज अगर सर्विस रूल्स को पढ़ो तो अगर मुझे ये लेक्चर लेना है तो परमिशन I have applied for whole day leave, but not given an especially meeting at 12 p.m. put by my committee. So I have to leave. I beg your pardon to incomplete this lecture. Thank you very much.
Now I request our principal and dean, respected Dr. A.K. Srivastava sir, and head of the department Forensic Medicine and Toxicology, Dr. Y.K. Pathak sir, to present a token of respect and appreciation for his esteemed presence and time for today's CME program. और हम लोग चेन है, हमारे गुरु जी, मैं फिर डॉक्टर आलोक कानपुर के ही प्रोडक्ट है और ये पोस्ट पे सर इधर सामने देखिए। डॉक्टर आलोक, इसको जरा शाल आप थैंक यू। प्रोग्राम और ये Sir, HOD Department of Community Medicine, to welcome our guests. Respected teacher and he's the president of IAM, government officials. So we have to in hurry every time and right now also. But I could not deny because Srivastava sir is my teacher also. So मैंने जब बोला और उन्होंने कहा कि आप आ जाइएगा 5 मिनट के लिए आ जाइएगा तो काफी होगा, मैं ठीक है मैं आऊँगा जरूर। और बड़ा अच्छा लगा आपके इंस्टीट्यूट में आकर, पूरा कैंपस और जो बीच का रास्ता है तो लगा कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में आके लगा कि वाकई में बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी और थोड़ा सा उसकी समस्या है। Anyway, so right now I am working as a registrar in the State Medical Council and also looking after the State Nursing Council, the State Paramedical Council and the State Dental Council, which is an overarching body comprising of 3 councils, and also we are conducting the examination of nearly 1 lakh students per year of different diploma courses in nursing and paramedical sector. So it is like a mini university, and there are very few persons, or I should say that there is only 1 or 2 persons from medical or nursing side, otherwise there is a lot of officials. So we are concerned with ethical issues, we are concerned with your registrations, your CME credit hours, CME points. So I think at this moment this is also a CME. I would like to suggest 1 or 2 things, that we get a request for giving credit hours in the just 2 or 3 days before the CME. There is a proper protocol how to apply for the CME credit hours, what is their use, and what are the time which is required to deliver to grant the CME hours. So I had a presentation, but right now I don't have, and I just want to narrate, because since last few days, last few months, we are having very problems for granting the CME hours. Actually CME hours देने का पूरा एक प्रोटोकॉल है, उसका एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है, उस पे आपको कम से कम 15 दिन पहले अप्लाई करना होता है। दिक्कत क्या होती है कि आप जब आपका सर्टिफिकेट है उसको में आपको CME आवाज देने होंगे, उससे एक नंबर भी आपको जनरेट होकर मिलेगा।
तो वो सारे प्रोसेस में कम से कम 15-20 दिन का समय लग जाता है। हमें वैलिडेट करना पड़ता है, ब्रोशर देखना पड़ता है, लेक्चर्स कितने हैं, एटलीस्ट 8 आवर्स के लेक्चर होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग योर वैलिड फंक्शन, योर इनॉर्मल फंक्शन, लंच, टी ब्रेक एटसेट्रा। वो सब को हटा के कम से कम 8 घंटे के आपके लेक्चर्स होंगे, तभी आपको 3 days फॉर 8 आवर्स, सॉरी 3 आवर्स फॉर 8 आवर्स पर डे के हिसाब से आपको वो दिया जा सकेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें प्रमोशनल एक्टिविटीज ना हो, जो आपका ब्रोशर हो उसमें कहीं मेंशन ना हो कि दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस कंपनी और दिस ड्रग कंपनी एटसेट्रा। दैट इज नॉट एट ऑल admissible. In my capacity as at my level best, whatever you have problems regarding medical, dental, nursing or any sector, I am here. Thank you very much. For his valuable efforts, time and presence today. They need following an injury. We have Dr. Raja Rupani sir, who did his MBBS from BRD Medical College, Gorakhpur, and MD in Forensic Medicine and Toxicology from KGMU, Lucknow. In past, he has worked as assistant professor at Hind Institute of Medical Sciences, Barabanki for 2 years, and currently working as additional professor, KGMU, Lucknow since 2013. His research papers have been published in various national and international journals. He has also co-authored a book. He has been a reviewer in Journal of Advances in Medicine and Medical Research. He is also a lifetime member of Indian Academy of Forensic Medicine, Indian Academy of Biomedical Sciences, and Indian Medical Association. He has been serving as the Assistant Controller of Examiner for the Examination Committee of KGMU for the last 7 years. Sir, I request you to come upon the stage and throw more light on the subject, medical legal case and injury reports. Faculty members, dear residents, interns, students, I am very grateful to Yogesh Officer who has called me to talk about this issue. It is very important from legal point of view, as well as emergency point of view. क्योंकि आप रेजिडेंट जो है इमरजेंसी में काम करते हैं तो मेडिकल लीगल केसेस आते हैं, तो कोई मेडिकल लीगल केस को कैसे पहचानना है, उसको क्या करना है, क्या गाइडलाइंस है, व्हाट आर डूज एंड डू नॉट्स. तो जस्ट फास्ट रिकैप बिकॉज एवरीबॉडी इज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. तो आप लोग जानते हैं मेडिकल लीगल केस क्या होता है? व्हाट इज अ मेडिकल लीगल केस? एनीबॉडी? नो स्टूडेंट्स, इंटर्न्स, रेजिडेंट्स? मेडिकल लीगल कब कहेंगे? व्हेन इट इज अ मेडिकल एज वेल एज लीगल एस्पेक्ट. लीगल कब होगा? वी विल सी. As you know very well, medical legal case in the case of injury is a case of injury or ailment where attending doctor after taking history and clinical examination of the patient thinks that some investigation by law enforcing agencies are essential. ठीक है, कहीं ना कहीं लॉ का एनफोर्समेंट जरूरी है. So as to fix responsibility regarding the case. तो जहाँ भी लॉ का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वहाँ पे हमें अलर्ट रहना चाहिए. So it's not a medical case, it's a emergency situation is most important in establishment of patient. एमएलसी हो जाएगा, पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करना जरूरी है. इमरजेंसी केयर जो हम एबीसी केयर करते हैं, तो मेडिकल केयर शुड बी गिवन. ट्रॉमा के केस में इन केस ऑफ ट्रॉमा इट विल लेबल एज एमएलसी इफ देयर इज अ सस्पेक्शन ऑफ फाउल प्ले इवन द इंसिडेंट इज नॉट ऑफ रिसेंट ओरिजिन. अगर कोई पुराना केस है, ट्रॉमा की हिस्ट्री है, भले वो रिसेंट ओरिजिन ना हो,
Foul play अगर जहाँ suspicion आया, you must inform the police. And maintain an emergency register is important. हर hospital, हर medical college, हर emergency register is important to be maintained. And emergency will be initiated and documented in the register. Person particular, हम लोग नोट क्या करेंगे emergency में? Particulars, identification marks, आदमी के particulars, identification marks, fingerprints, particular person accompanying, जो accompanying person है उसके नाम, relation, age and all. Medical documents should be prepared in duplicate. हमेशा 2 कॉपी बनाएंगे. With a ballpoint pen, overwriting avoid करेंगे. या कोई overwriting correction अगर है तो उसको initial लगा देंगे, authenticate कर देंगे. और last में full signature और stamp जरूरी है. Most important is abbreviation should be avoided. Details लिखने के बाद, patient का या attendant का लिखने के बाद overwriting नहीं करेंगे, ballpoint use करेंगे, duplicate पे रखेंगे और abbreviation should be avoided. Police should be informed under Section 39 CRPC by an attending and medical officer who is legally bound for it. अगर नहीं inform करेंगे तो it's a crime. In case of discharge, transfer or death, such a case is hospital police should be informed. अगर उस patient को आप discharge कर रहे हैं, transfer कर रहे हैं और अगर death हो गई, तो ही पुलिस को inform करना जरूरी है. क्योंकि कल को follow up में जब पुलिस ढूंढती आएगी तो केस कहाँ के पता नहीं होता कि कहाँ transfer हो गया, कहाँ discharge हो गया या expire. Confidential record को ध्यान में रखता है और उसको store करना under safe custody. सारे रिकॉर्ड्स मेडिकल रिकॉर्ड्स को सेफ कस्टडी में स्टोर करना. फॉल्ट क्या है यहाँ पे? अगेन टेक्निकल एंटी कम्बैटिव फोर्स नहीं समझ पाएंगे, ठीक है? थैंक यू. तो भी जब भी केस आए ध्यान देंगे, उसको पहचानने की कोशिश करेंगे. Committee session. Hope all of you have appreciated the efforts. Now, I humbly invite Dr. Vivek Agrawal sir, Head of Department of Microbiology, to felicitate Mr. Raja Rubani sir. Dr. Raja. To felicitate our speaker, Dr. Prakriti Gupta ma'am. Request Dr. Professor R.K. Stomer sir to welcome our chief guest, Dr. G. Khan sir. In the same way, the concept of consent has become a milestone in every field of medicine today. To engage upon the eyes of the same, do I most humbly acknowledge the presence of Dr. Anju Singh ma'am amongst us today. Ma'am did her MBBS from KGMC Lucknow and post-graduation in forensic medicine from SN Medical College, Agra. She has published more than 14 papers in various international. She is the professor and head of the Department of Forensic Medicine and Toxicology at Rajashri Dashrath Autonomous State Medical College, Ayodhya. She is also the chairman of Gender Harassment Committee at her institute. So we most graciously acknowledge her blossoming presence upon our dais. Ma'am, would you please do us the honor? And I would like my sincere thanks to Dean sir, Professor Dr. E.K. Srivastava sir for giving me such an opportunity to deliver lecture on the forensic day. I would also like to thank Dr. Pathak sir for his always encouraging me and having a very helpful nature. So not taking too much time coming on my lecture. The topic for my lecture is consent in medical practice. From the morning, a lot is discussed about the consent. Now I am presenting this lecture. It is a voluntary agreement, compliance or permission to do something, and it is taken before conducting any procedure. In day-to-day practice,
consent is taken or given before doing any procedure or act, and the consent is taken for every procedure separately. It is not a combined procedure, combined type of procedure to take consent for every act. It is the separate act, separate consent for every type of procedure. So consent is a voluntary agreement, compliance or permission, and legally consent is defined as when two or more parties agreeing on the same thing and in the same sense. So in medical practice, today's my topic is related to the medical practice. So it is the willingness of a person to subject himself for examination, investigation and treatment. This is consent. Coming to my next slide. President Head, Department of Biochemistry. Our Dean Sir, President of the Organizing Society today, Dr. A.K. Srivastava Sir, our Secretary, Dr. With passage of time and change in culture, women have taken the center stage by gradually moving into the workforce and getting career-oriented. In our midst this afternoon, we are honorably pleased to welcome Dr. Mosmi Singh Ma'am, who is an alumnus of GSVM Medical College, Kanpur, and she is a postgraduate in Forensic Medicine and Toxicology from KGMU, Lucknow. She is a member of Indian Academy of Forensic Medicine, Indian Academy of Biomedical Sciences and Emergency Medicine Association. She has been the recipient of the Best Teacher Award in her institution and the Award of Honor in Forensic Medicine. She has published many papers in various national and international journals. Presently, she is a professor in the Department of Forensic Medicine and Toxicology at KGMU Lucknow and is in charge of Forensic Radiology Unit at KGMU. She is also running the Age Estimation Unit. It is upon my prestige to welcome Her Eminence onto the dais. Good afternoon, everyone. And it is so overwhelming to present in front of my teacher, Dr. A.K. Srivastava sir. मुझे वाइवा जैसी फीलिंग आ रही है. So, I'm starting as my topic is medical legal issues in women healthcare country. And as today we are celebrating Forensic Medicine Day. अच्छा वहाँ पे मैं कैसे आप चेंज कर देना आप चेंज कर देना इसके साथ ठीक है आप देखो जैसे मैं चेंज कर देना. So today we are celebrating Forensic Medicine Day, and here are the few glimpses of last year's celebration in our department. And we had organized a seminar on medical negligence during COVID-19 pandemic. So all the illustrations which I am going to use in my presentations are taken from www blessing of the era. कुछ भी चाहिए ढूंढिए सब कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन ढूंढना क्या है ये पता होना चाहिए. अब जैसे आप लोग कोई मोबाइल में जो हम लोग ऐप इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद जब वो परमिशन मांगता है तो हम ऐसे उसको स्क्रॉल करते हैं इतनी स्पीड में शायद एक भी लाइन पढ़े बिना हम सबसे नीचे ढूंढते हैं आई एग्री, एंड जैसे हम आई एग्री दबा देते हैं और उसके बाद हम ऐप इंस्टॉल करना ऐप यूज़ करना शुरू कर देते हैं. वैसे ही जब हम लोग जाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो हम डिक्लेरेशन तुरंत साइन कर देते हैं. शायद कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, डिक्लेरेशन पढ़ते भी हैं, लेकिन कितने लोग हम पीछे जाकर देखते हैं कि उस डिक्लेरेशन में हमने कितनी चीज़ों पे हामी भरी है. जैसे इसमें से एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हम
जो डिक्लेरेशन साइन करेंगे अभी आप यहाँ से, आपको ये पता होना चाहिए इट इज मैंडेटरी। ये नहीं कि सीएमई आप हो रही है हम अटेंड करें, हमें इंटरेस्ट है हम अटेंड करें, आपको इंटरेस्ट डेवलप ही करना है। इट इज मैंडेटरी कि आपको अटेंड करने, आपको 30 आवर्स कंप्लीट करने इन 5 years, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ सीएमई। So these are the medical legal issues which I will be discussing today, and the first issue is the examination of a female patient by a male practitioner. इसके लिए मैं आपको एक केस सिनेरियो दे रही हूँ पहले। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले केस सिनेरियो दे रही हूँ मैं। A patient presented to the clinic with pain and swelling in axilla. Patient is a 35-year-old lady, and she presented to your clinic with pain in axilla, pain and swelling in axilla. So you started examining the axilla and extended your examination towards the neck examination and breast examination. Patient felt embarrassed at that time and she could not refuse the examination, but later on she put a complaint against the doctor for sexual abuse. तो इस तरह की सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हैं? ऐसी सिचुएशंस, ऐसे लिटिगेशंस ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप बर्डन देख लीजिए, बर्डन कितना है। जब मैंने सर्च किया कि हमारे इंडियन सिनेरियो में कितना बर्डन है, कितने केसेस फाइल हुए हैं लास्ट 10 years में अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, तो हमें ऐसा कोई डेटा नहीं मिला कि लास्ट 10 years में हमें कितने केसेस फाइल हुए हैं या एक साल में कितने केसेस फाइल हुए, लेकिन केसेस हियर एंड देयर इन एवरी कॉर्नर ऑफ कंट्री केसेस फाइल हो रहे हैं। ये जो मैं स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट कर रही हूँ, दिस इज अ यूएस बेस्ड स्टडीज, लाइक इन यूएस देयर स्टडी कंडक्टेड ऑन 10,000 physicians in US, and out of which 1,891 completed and returned their questionnaires, and out of 1,891 a total of 176 respondents acknowledged sexual contact with one or more patients. And in the same study, out of these 176, 164 were male physicians and 12 were female physicians. Then in one more study, 75 male psychiatrists and 8 female psychiatrists. Out of 1,316 respondents, they acknowledged having sexual contact with their patients. आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए what you are doing is right, should be right. Thank you so much. किसी को भी कोई डाउट हो जो मैंने फैक्ट्स रखे हैं उसमें किसी को भी कोई क्वेश्चन है? Our Dean Sir, Dr. A.K. Srivastava Sir, Dean Academic, Dr. S.B. Rai Sir, and Dr. Y.K. Pathak Sir, Secretary of today's organizing committee. Forensic medicine have helped to increase the accuracy and reliability of forensic analysis, which has in turn improved the ability of law enforcement to identify and prosecute perpetrators of crime. We are delighted to have Dr. Yasuddin Khan Sir, who is an alumni of MGA Medical College of Jaipur and has done his MD in Forensic Medicine and Toxicology from AMU Legal. He was Joint Director Medical Legal State Forensic Laboratory Mahanagar, Lucknow, and State Medical Legal Cell at Shwab, Lucknow. Presently, he is Additional Director of Medical Legal Cell at Shwab, Lucknow. It is my proud privilege to welcome Dr. Khan to enlighten us with his brilliance. He was narrating how many MD forensic postgraduate is required in India. From that I learned. उसके बाद मैं आया लखनऊ, आने के बाद मैंने शासन में एक प्रपोजल बनाया, मेड वन प्रपोजल कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक MD फोरेंसिक की नियुक्ति होनी चाहिए PMS. डॉक्टर पाठक वाज देयर विद मी, हम लोग साथ गए शासन में, और आपको जानकर खुशी होगी
कि 150 MD फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए पोस्ट सरकार ने मंजूर कर लिया और उसके तहत MD फॉरेंसिक के लोग जो मेडिकल कॉलेज में ही जाते थे पढ़ाने, अब हमारे यहाँ करीब 34 MD फॉरेंसिक PMS में आ चुके हैं. They are working, they are although very young people. And the 3 generations are sitting here, Dr. Srivastava, Dr. Vaike Pathak, myself, actually Dr. Mosmi and Dr. Madhu, they are junior to me, and they are academics. We are not academics. Dr. Pathak is not also myself. He is now here as an academician, but previously he was a state medical expert, where I am staying there as a medical expert. कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होगी. कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता. रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता. जब मैं PMS में आया, ज्वाइंट PMS in 92, तो लोगों का सीधा कमेंट था, यही डॉक्टर हम मुर्दा वाले हैं. बिकॉज फॉरेंसिक मेडिसिन को ये कहा जाता था कि ये मुर्दा के डॉक्टर. और मैंने आज ये टॉपिक इसलिए रखा, रिसेंट एडवांसेस इन फॉरेंसिक मेडिसिन जस्टिस के लिए, कि पहले जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर है अभी भी, ये तो अलग बात है कि उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में जो भी 40-45 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, KGMC को छोड़ के किसी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर को स्मार्ट नहीं करते. दिस इज फैक्ट, आई एम टेलिंग, क्योंकि PMS वाले करते हैं. ये अच्छी बात है, इट्स वेरी बिग थिंग कि KGMC में डॉक्टर मौसमी, डॉक्टर राजा रूपानी एंड ऑल द फैकल्टी दे आर एसोसिएटेड विद द ऑटोप्सी. या आई नो, आई एडमायर दिस वन, एंड best recent things are in UP going by these people. They are doing all these recent things. They are doing, I just admire also. पहला पेपर जो वर्चुअल ऑटोप्सी पे आया 2014 में, मैंने PMS पत्रिका में लिखा था. कैसे बने होगा? अच्छा ठीक है, किसने सुना? तो मैंने वर्चुअल ऑटोप्सी में लिखा. DG थे जावेद अहमद साहब, वो NICFS चले गए रोहिणी, और उन्होंने कहा कि तुम लोग आओ. आदर्श कुमार भी थे, वो भी जूनियर हमसे एम्स के आजकल प्रोफेसर हैं. बहुत ही इज द राखी सावंत ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन. We went there and part of also आप गए थे? हाँ, तो वर्चुअल ऑटोप्सी जब उन्होंने सुना, आप भी आज देख रहे हैं, पढ़े होंगे, आपको पता है लेट राजू श्रीवास्तव की ऑटोप्सी वर्चुअल ऑटोप्सी हुई थी. अभी जो राजू श्रीवास्तव जी का इंतकाल हुआ, तो उनकी ऑटोप्सी वर्चुअल ऑटोप्सी हुई एम्स में. अब चूंकि एम्स के पास संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, हम लोग जो मेरा स्टेट मेडिकल लीगल सेल है था, वो 12x12 का कब्रिस्तान था. उसमें 150 लाशें रखी हुई थी और 40 साल से डॉक्टर पाठक उसका पूजा करते थे. जब मैं आया तो मैंने कहा कि इसको हटाओ. तो आई ऑल्सो थैंक्स हियर इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर मौसमी कि इनके KGMC के लोग एनाटॉमी रूपानी आकर के एक कमेटी बनी और 135 स्कल और सारा स्केलेटन का सेट मैंने डोनेट कर दिया KGMC को, कि जो नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं उनमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए बच्चों को पढ़ने के लिए. तो क्या हुआ कि साहब, मैंने इट वाज बिग वर्क बाय मी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट वाज डन. तो अब जो वर्चुअल ऑटोप्सी की बात आ रही है, जो दुखदाई है, जो बहुत ही पेनफुल है मेरे लिए, आप भी फील करेंगे, यू आल्सो फील, कि हम सोच तो रहे हैं कि वर्चुअल ऑटोप्सी शुरू हो. शिलोंग में हो रहा है, शिलोंग में हो रहा है, बिकॉज माय सन इज आल्सो रेडियोलॉजिस्ट, एंड एम्स वालों ने शुरू कर दिया.
लेकिन इसके पहले जो एक चीज चल रही है, आपको बता दूं फॉर इंफॉर्मेशन, बिकॉज कि आपको फोरेंसिक मेडिसिन डेवलपमेंट हुए हैं वो आप लोगों को नहीं पता है। द फर्स्ट डिजिटल पीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इशू हुआ वो 2014 में गाजीपुर जिला जो है, बहुत ही रिमोट जिला है गाजीपुर, वहां से शुरू हुआ सर। एंड एट प्रेजेंट जी सर बोर्ड में लगाया नहीं बता रहे, मैनपुर, सीतापुर, चंदौली, बलिया, बस्ती, and in all districts they have started digital postmortem report, issuing digital postmortem report, not like पैरासिटामोल लिख के चले आ जाते हैं लोग। कोर्ट ने कहा कि भाई आप लोग एडवांसमेंट में क्या कर रहे हैं, और एक बहुत 3-4 बार मीटिंग हो चुकी है कि हम लोग डिजिटल पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही इशू करें लिख करके। अभी बहुत सख्ती से, बिकॉज कि हमको बना दिया ऑब्जर्वर गवर्नमेंट ने। अभी मैं डॉक्टर मौसी से बात भी कर रहा था कि हम लोग डिजिटल इशू करें, उन्होंने कहा कि सर 4 जगह सेंटर डिस्पर्स करा दीजिए तो मैं करा दूंगी। इसके लिए भी मैंने मीटिंग में पाठक सर थे अभी लास्ट ईयर, डॉक्टर वेद दत्तान, मैंने कहा कि साहब हर जगह जो आपका जो मॉर्चरी है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मॉर्चरी है वो बेटर है गवर्नमेंट मॉर्चरी से, क्योंकि उनको एमसीआई को एनएमसी को दिखाना होता है हमारा बहुत साफ सुथरा, और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का मॉर्चरी है वो किसी को दिखाया नहीं जाता। वो एक टेबल होता है, और चूंकि मैं क्रिटिसाइज करता हूँ तो मैं गाली बहुत सुनता हूँ। टेबल होता है, जमीन में पटक के उसका तोड़-ताड़ के, और जो फार्मासिस्ट होता है ही इज द संजय ऑफ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एंड डॉक्टर इज धृतराष्ट्र। What he narrates, right? एक जिला का नाम नहीं बताऊंगा, एक केस मेरे सामने आया हुआ है। Actually there were 2 cases as a medical expert. बॉडी पे कोई इंजरी नहीं है, there is no injury on the body, external or internal, कहीं कुछ भी नहीं है। Cause of death क्या लिखा भाई? Strangulation। क्यों लिखा? मैंने पूछा उससे, अभी रिसेंट कल का केस आया हुआ। कहा कि सर वो डीएम का प्रेशर था, जल्दी करके दो, तो चीफ साहब बोलते हैं फार्मासिस्ट को, वो लिखवा दिए। हम बोले तो आप तो 201 के मुलजिम हो गए भाई, जो चीज नहीं है बट वी हैव रिटन, यू आर द क्रिमिनल नाउ। सब मैं सिविल का एग्जाम दे के आया हूँ, इंटरव्यू, अमिताभ तो उस पे भी काबिल नहीं रह जाओगे। पनिशमेंट हो गया, 2 ही साल पनिशमेंट हुआ राहुल गांधी को ना, तो भटक रहे हैं। डॉक्टर को हो जाएगा तो सर नौकरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, मैं प्रचारक हूँ फोरेंसिक मेडिसिन का, मैं कोई प्रवक्ता नहीं, मैं प्रचारक हूँ। मैं प्रचार करता हूँ कि आप लोग फोरेंसिक मेडिसिन को समझिए, आप लोग भी फोरेंसिक में एमडी करने की सोचिए, बिकॉज कि जब हम लोग करने गए थे तो बहुत गाली सुनते थे, बीवी से भी, ससुराल वालों से भी। डॉक्टर ने शादी किए थे तो मुर्दा के डॉक्टर हो गए। लेकिन अब जब सारे पुलिस वाले जब सलाम करते हैं तो हम लोगों को भाव मिलता है, तो वही हमारी श्रीमती जी कहती है अच्छा किए, यही किए। क्योंकि एक बार बता दूं, मैं बलिया में पोस्टेड था, डॉक्टर नागेंद्र सिंह सर्जन हुआ करते थे, उनकी स्कूटी से हेलमेट के लिए पकड़ लिया, तो उन्होंने पूछा कि पुलिस वाले ने पूछा कि आप कहाँ पोस्टेड हैं? बोले कि वो जिला अस्पताल में। तो बोले डॉक्टर जी खान साहब जहाँ पोस्टेड है वही। तो गाली देके बोले कि अरे वो तो हमसे 20 साल जूनियर है। आए मेरे पास, बोले कि तुमको पुलिस वाले सब जानते हैं और हमें नहीं जानते हैं, हम सर आप अंधेरे कोठरी में ऑपरेशन करते हैं सर्जन। हम लोग जाते हैं मौतरी के सामने 1500 आदमी खड़ा रहता है, अब दिखाते हैं कि हाँ पोस्टमार्टम कर दिए, दैट्स व्हाई वी आर मोर एक्सपोज्ड देन यू। तो बोला अच्छा तुम्हारे लोग भी ठीक है, यस वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, कल कोई और था, आज कोई और है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. We shall definitely carry those answers of knowledge in our ears ahead.
Now I humbly request Dr. Sakshan Srivastava sir, Professor and HOD Department of Pediatrics, our Dean and President of Organizing Committee, Dr. A.K. Srivastava sir, Secretary of Organizing Committee, Dr. I.K. Pathak sir, Dean Academics in Chandra, Dr. S.P. Rai sir, to felicitate our dynamic, respected guest speaker, Dr. Khan sir. नाराज है क्या? To please move towards lunch. The topic of same-sex marriage has been a contentious issue for years, and it continues to spark debate all around the world. The debate centers around the question of whether or not same-sex marriage should be legal or not. Manusmriti, I would like to tell the audience for your edification, Manusmriti, and hereby I quote, says that sex between two men is not normal. If one engages in crooked sex, one will fall down from one's jati. So my question here is that there has been evidences of homosexuality in mythology, but state one evidence where there has been marriage between homosexuals, please. Thank you, dear question, Madam Speaker. My prime point, the fact that there was no marriage between homosexuals is the reason I'm standing here fighting today. Point number one. Point number two. The fact that you mentioned something from Manusmriti clearly indicates that homosexuality was practiced back in the day. That is why there were so many punishments that you just mentioned after those two lines. The fact that there was something practiced, that's why there was a punishment for it, clearly indicates that there is an evidence of homosexuality right there. We are not discussing whether homosexuality should be legalized, whether marriage between homosexuals should be legalized. Please do not deviate the audience and stick to the topic. Another moment which will be awaiting for the applause, that since you're mentioning marriage between individuals, Agni, the god of fire, is married both to goddess Swaha and the male moon god Soma, with Agni having receptive role in the relationship. They are married and you should check your facts before you say. In addition to this, before the next question, in 2400 BC, Kumbhadev and Nilankum are believed to be the first same-sex couple in recorded history to be engaged in a marriage. Gods even reproduce asexually. Lord Shiva drank poison. Can you? Lord Shiva drank poison. As a bisexual individual, I listen to the poison of the society every single day of my life. That is more than You're telling sure to listen to the poisons. Can we, judges, please note, can we not move this to a very lame and dumb topic of conversation and stick to the conversations of opposition? Have any other question? And if it is about asexual marriage, then what about the children being born from the infertile couple of the society? Are those children not considered as the children of the society? Do we not consider them? So Daniel, I have a question. Yes. Like, आपकी फॉर मोशन की तरफ से बहुत लोगों ने कोट किया कि बहुत सारे सिंगल मदर्स हैं जो अपने बच्चों को कैरी कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो क्या ये प्रिविलेज है? वेदर यू विल काउंट इट प्रिविलेज कि एक बच्चा अपनी सिर्फ मदर के साथ रह रहा है, सिंगल या फादर के साथ रह रहा है, क्या हमें इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए? The way you answer, I am just loving it. You answer that way only. Don't
don't consider I am a judge. No, Just answer that way. Ma'am, could you please repeat the question? Just one. My question is कि many of you have quoted like single mothers are there. They are managing their kids single, lonely. So my question is this a privilege? You will count it a privilege? Is it good thing the child is living with single parent, whether mother or father? क्या हमें इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए? अगर हम किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं जो हमें लगता है कि इससे हमें फ़ायदे हो रहे हैं, हम उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं ना, तो क्या ये चीज़ अच्छी हो रही है बच्चे के साथ? क्या ये उसके लिए प्रिविलेज है? हमें और ऐसे ही कपल, ऐसे ही लोग लाने चाहिए जो सिंगल हैंडेडली आप बच्चे को कैरी कर रहे हैं? Yes. Ma'am, we live in the Indian society. In the Indian society, a woman is considered a goddess. My grandmother brought up both my mother and my Masi without a husband. She had a divorce at a very young age in her life. So it is up to you how you see that as your perspective, to have it as a privilege, to have that feminine energy of a goddess and raise both of your kids, or it is up to you that you feel that you need the dependency of a man to bring your children up. This has been an issue of a debate for long. What I am unable to understand, if you could please explain it to me, would be one section of the society is fighting because they are uncomfortable, they are phobic to another thing in the society, and one is fighting for their right to life. So do you think that the section of the society that is fighting to control another person's life should win? In any case, what section of the society that is fighting to control another person's life should win? And the section is majority. Who's controlling? So I don't understand why the opposition is trying to force us and blame us that we are going to kill them. We are not asking you to kill homosexuals. You have to live. We don't need to murder people by our own hands. We can also influence them into suiciding or creating pressure, which can lead to death. There are many instances where people kill themselves rather than coming out to parents because they are forced to marry individuals of opposite gender or they get suicided. There are many other reasons which cause it. Talking about suicide, ऐसे भी instances हुए हैं and it's a study which is proven कि homosexuals में suicide rates are much more higher and it's not because of the pressure we are creating but it is there. So how can you justify that? There's no pressure. Okay. I'll ask you a thing. We have decriminalized sexual intercourse for homosexuals, right? So now what do we do with this sexual in society? Do they just exist with sexual intercourse in their lives? Is there nothing else to life? आपको इंडिविजुअली किसी के भी साथ रहना है करो, जो करना है करो, मैरिज को लीगलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। इनके पास फैमिली होनी चाहिए, इनके पास बच्चे होने चाहिए, इनके पास सारा प्यार होना चाहिए दुनिया का, बाकी सारी दुनिया भाग में जाए, ठीक है? बाकी दुनिया में किसी के पास कुछ नहीं होना चाहिए, किसी के पास no one deserves, homosexuals don't deserve love, they don't deserve the right to live together, they don't deserve medical insurance, they don't deserve the right to property, they don't deserve the right to be benefactors to anything in a will. Heterosexuals should be given all the right according to Sir Speaker. Time of speakers. Now I would like to request Dr. Sachin Mishra, Junior Resident, to express his views and regards for the CME program. Rather, it is a very happy CME day. It wouldn't have been possible celebrating Forensic Medicine Day with the CME like this with such a huge crowd for this very nice day which we had spent. I just want to sincerely thank our esteemed principal sir, Dr. A.K. Srivastava sir, and all the Forensic Medicine department for organizing such a wonderful CME which was very wonderful, full of facts and very lively, and at last it was having a beautiful element of this debate. So finally, at last, I also want to thank all the guest speakers who were here
to enlighten us with the facts of forensic medicine, which we all should know. Either we are students sitting at the back, we are PG residents, or we are doctors itself. Because it is we who are practicing it, and we have to implement rather than getting stuck into something else. So with these very beautiful words, I just want to request on behalf of all the delegates that this is a inter-collegiate CME, which should also get involved in the intra-collegiate CMEs, and we should also get ourselves enlightened with all the facts going out in the present society, with all the kinds of subjects which we are going through. With these beautiful words, I again thank all the organizing team for organizing such a wonderful CME at this T.S. Mishra Medical College and Hospital. Thank you, sir. Now I would like to call upon Dr. Brigadier Jeshpal sir, our CMS and Head of the Department of ENT, to please bless us with your words. Well, so I am supposed to say something on every side, and obviously it has to be good only, because not only you have to be correct, you have to be politically correct. So, I appreciate the most important thing what I have noticed here is participation by everyone at a very short notice. People have all the faculty, they are students, they have participated irrespective of their subjects and departments and orientation, I mean towards academics. The fact that the whole CME has been organized on a very short notice and putting up such a beautiful, excellent show is really praiseworthy. I request you all to raise your hands and give them a big applause. एक डिबेट के बारे में मेरी बात में थी, I would like to share, यहाँ पे बोलने वाला कोई गे या लेस्बियन उस कैटेगरी में नहीं था। सब जगहों पे जैसे हमारा सफल होना हो एक अलग चीज़ है, फ्यूचर बताता है। विधानसभा राज थे वेस्ट बंगाल के, और ये यहाँ पे मंत्री जी तो नहीं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री रहे केंद्र में, ENT सर्जन DSPM के, आपका भी जोश हो सकता है, पर बोलते रहिए, बोलना अच्छा होता है और डेलीवर करना सब चीज़ों। And I would like to take this opportunity to express my heartfelt gratitude for the incredible work that organizing this event. Sir, your hard work, dedication and attention to detail have truly made this event a success, and I can't. चिकित्सा संकाय डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव और यहाँ पे पारितोषिक वितरण करें। लेकिन जिसको मैं सोच रहा था, जिस सीक्वेंस में वही सीक्वेंस आया, तो my best wishes to the winners of this program. Prize goes to Pranjali. Second prize goes to Daniel. सर सामने सर। And first prize goes to star of today's debate, Oshi. बस 1-2 मिनट हम लोग कंक्लूड करने जा रहे हैं। बहुत
स्पेशल काम किया है। हाउ मेनी ऑडियंस इज फॉर ओके, फिर से हाउ मेनी आर अगेंस्ट? इधर थोड़ा सामने देखिए। हमारे जो मास्टर ऑफ सेरेमनीज जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं महक जग्गी को आमंत्रित करूंगा आकर के सर के से हाथों से ब्लेसिंग्स ले। दिस इज द मोमेंटो फॉर यू फॉर डूइंग। इधर सामने और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का टर्न आ रहा है, तो डॉक्टर सोनाली यंग डायनेमिक लेडी। एक बहुत ही वर्षाई आप लोगों के बीच में आदमी है, any guess? मैंने वर्सेटाइल और यंग बोला है। कैसे आ रही है? आदित्य मिश्रा कहाँ है? जरा आ जाइए। हॉस्पिटल का जहाँ अच्छा पूरा होता है सब जगह प्रेजेंट रहते हैं। इधर सर, इधर सीधा रखिए। Dr. Maike Patel sir and Dr. Rajesh Kumar sir, Head of Department of Community Medicine. सेशन में प्रेजेंट थे, जब हमारा ओपनिंग सेशन चल रहा था तो एक वर्ड सर ने बोल दिया था कि हमारा डिपार्टमेंट बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट है। सर
आपका डिपार्टमेंट छोटा हो सकता है, हम लोग दिल देखते हैं और बर्गर का पेड़ ये नहीं देखता है कि उसका साइज इतना छोटा है। Who happens to be the chief of the forensic department. Thank you very much, sir, for guiding us. तो सर के लिए memorable memento from our side. Before we come, thanks, I would like to say my words. I am really overwhelmed by your response. और सबसे बड़ी बात है कि जब से मैं यहाँ पे हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हमारे प्रोग्राम में रिस्पांस नंबर 1 है। कोई भी एकेडमिक एक्टिविटी हो, डॉक्टर विवेक, आज मैं चाहूँगा कि मैं डॉक्टर प्रेम कुमारी ब्राह्मणी को भी, उन्होंने CME के लिए अच्छा लेक्चर तैयार कराया और जिस तरीके से डॉक्टर प्रकृति को उन्होंने गाइड किया, फैकल्टीज का सबका बहुत ही सहयोग मिलता रहा है और लास्ट मोमेंट पे अगर हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। लेकिन और इन सब के बीच में 2 आदमियों को हम विशेष रूप से थैंक देना चाहेंगे। एक हमारे टीचिंग, एकेडमिक, साइंटिफिक एक्टिविटी, मेडिकल एजुकेशन, एथिक्स कमेटी सबके करता धरता है, प्रोफेसर राजेश कुमार। और दूसरे हैं हमारे संकट मोचन डॉक्टर SP राय। काफी कम हो गई। अच्छा भी है कि बच्चों को हमारे से मिलने का मौका मिल रहा है, जो अक्सर पेनफुल ही होता है, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों ने बहुत अच्छा सब कुछ एक ओवरऑल हमारे ख्याल से बहुत ही एक्सेलेंट हो रहा। थैंक यू फॉर यू ऑल। अभी ठंडे हैं इस समय, बाहर गर्म होके जाइएगा। I would like to take this opportunity to express my heartfelt gratitude for the incredible work like Professor Ashok Kumar Srivastava you have done in organizing this event. Your hard work, dedication and attention to detail have truly made this event a success and I can't thank you enough. इसके अलावा मैं प्रोफेसर राजेश कुमार, डीन एकेडमिक प्रोफेसर SP राय, पैथोलॉजी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर MK श्रीवास्तव, एनेस्थेसियोलॉजी की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ब्राह्मणी, प्रोफेसर देशपाल तथा अन्य सभी वरिष्ठ प्रोफेसरों के विभागाध्यक्षों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी गरिमा में उपस्थिति के साथ इस समारोह की महत्ता को बढ़ाई थी और इसके पहले स्पेशली प्रोफेसर कुमार और प्रोफेसर SP राय जिन्होंने वाकई में इस प्रोग्राम के शिल्पी थे। They were the architect of this program. Professor Ashok Kumar Srivastava, Professor Rajesh Kumar and Professor SP Rai, they are definitely the architect of this program. This program बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ और सफल हुआ। इसके अलावा हमारे गेस्ट स्पीकर्स प्रोफेसर लॉस्की सिंह मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अंशु सिंह Ayodhya Medical College and Professor Mukesh Yadav, Principal Bana Medical College, who is now Additional Director in Medical Education Department, and also our Chief Guest
Mr. Alok Kumar, Dr. Alok Kumar Srivastava, Registrar and Secretary of the State Medical Faculty. I thanks to these all dignity and Dr. Raja Rupani of KCMC. I would like to extend my thanks to Master of Ceremony, Dr. Mahat Jaggi and Dr. Mukund Mittal, and also to the involved faculty of my department, Dr. Sonali and Dr. Vaibhav, Dr. Kovid, tutor of the Department of Anatomy, Dr. Sachin Ojha, Kovid Pandey, Sachin Ojha, and Dr. Himanshu, and all the interns without that. TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कोई भी कार्यक्रम हो नहीं सकता जब तक कि हमारे पास मिस्टर निखिल और मिस्टर शरद जैसे लोग ना कोई एकेडमिक एक्टिविटी हो नहीं सकती है। इन लोगों ने जितनी मेहनत और लगन के साथ ये काम किया और साथ में सिक्योरिटी की पूरी सिक्योरिटी पड़ता है अंडर द सुपरविजन ऑफ मिस्टर परेश पांडे। तो वर्चुअली मुझे अगर किसी को थैंक्स देना है तो मिस्टर निखिल एंड मिस्टर सर